Welcome to the English class. Chapter number 6, Poets and Pancakes. Episode number 6, Standard 11. तो यहाँ पर जो पूरा जेमिनी स्टूडियो बहुत समय के बाद वेट कर रहा था कि कौन आ रहा है, कोई बहुत बड़ा पोएट आ रहा है। तो वे सभी सोचने लगे कि जॉन केट्स आ रहा है, शायद शैली आ रहा है, पीबी शैली, या तो बायरन आ रहा है। फिर आगे जाकर टी.एस. एलियट का नाम आता है। सबसे पहले तो वर्ड्सवर्थ और इसके साथ टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन का नाम वो याद करते हैं। तो इनमें से कौन आता है वो सबसे सोचने लगते हैं। फिर बाद में बहुत समय के बाद पता चलता है कि कोई एडिटर, और वो भी बहुत बड़ा एडिटर तो नहीं है। तो अंत में वो आ जाता है। बॉस उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करना चाहता है। शुरू के जो उनका बॉस का जो प्रवचन था, उन्होंने बहुत लंबी स्पीच उनके अप्रिसिएशन में दी। It was obvious that he knew precious little about the poet or the editor. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. वैसे शुरू में तो इनके प्रशंसा के शब्द किए गए, और इसके बाद जो पूरी स्पीच थी इसके अंदर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में सेंटर में ये सभी बात बताई गई। Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. और उन्होंने एडिटर ने फिर स्टार्ट किया। उन्होंने सीधा ही बिना कोई संबोधन के ही सीधे ही बोलना शुरू कर दिया। किसी को पता नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वो बोलने वाले हैं। उन्होंने शुरू कर दिया, द होल थिंग दैट लास्टेड अबाउट एन आवर। देन द पोएट फ्लैट एंड वी ऑल डिसअपीयर्ड इन अटर bafflement. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? So, what is an English poet doing in a film studio? तो वो यहाँ पर क्या कर रहा था? Which makes the Tamil films for the simplest sort of people. तो जहाँ पर स्टूडियो के अंदर तमिल फिल्म वही प्राइम जो कार्य रहता था, मुख्य कार्य रहता था, यहाँ पर इंग्लिश पोएट क्या कर रहा था, ये सभी के मन में विचार आ रहा था। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste of English poetry. तो सभी को तो वैसे अंग्रेजी पोएट की इंतजारी में थे कि वो कोई इंग्लिश में पोएम सुनाएगा वगैरह। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. तो सभी के लिए यहाँ पर वो जो unexplained, कोई बता ही नहीं गई, समझा ही नहीं गई, ऐसे रहस्य की बात यहाँ पर उनकी विजिट बन गई थी। The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistence, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to the another editor enclosed postage for the return of the manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. A short story content organized by a British periodically by the name The Encounter
Of course, the encounter wasn't known commodity among the Gemini literati. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript. तो इस तरह से वहां पर जो उन्होंने लिखकर भेजा, माने वो स्टोरी वगैरह, तो जो इनकाउंटर के अंदर पब्लिश होने वाला था, टू एंड। तो इस पेज के ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर फेयर बुक। Did the people at Gemini Studio have any particular political affiliations? जेमिनी स्टूडियो के साथ जुड़े हुए सभी को क्या कोई राजकीय एफिलिएशंस इनका जोड़ान था कहीं पर? दूसरा, rearmament army welcomed at the studios. Why was the moral rearmament army welcomed at the studio? इनको किस लिए उनका स्वागत किया गया था? Third, name one example to show the Gemini Studio was influenced by the plays staged by MRA. Fourth, who was the boss of Gemini Studios? Fifth, what caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studios? Sixth, why is the Englishman visit referred to as unexplained mystery? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको फेयर बुक के अंदर लिखना है, आपको पूरे यूनिट के साथ इनका भी चिंतन मनन करना है। आगे की बात करते हुए, in those days the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notice to make you feel you were sneaking into a forbidden area. And there were copies of the counter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shooken heart. It was the poet who had visited the Gemini Studios. I felt like I had found a long-lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel, and in the final reel of the film, Stephen Stephen, that was his name. तो यहाँ पर फिर उनको याद आता है कि ये कौन है, तो इनके बारे में वो बता रहे हैं। An English poet, essayist who concentrated on theme of social injustice and class struggle. तो इनके ऊपर ये लिखने वाला वो राइटर भी था, पोएट भी था, एसेइस्ट भी था, और इसके बाद वो एडिटर भी था। And years later, when I was out of Gemini Studio and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin, special low-priced student edition. In connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. तो यहाँ पर मैंने माने हमारे राइटर ने जब जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, इसके बाद उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, तो टाइम बहुत रहता था उनके पास, मगर पैसे नहीं थे, तो वो जो सस्ता रहता था प्राइस में, उनके ऊपर उनका ज़्यादा आकर्षण रहता था। तो उनकी नज़र पड़ती है मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बगल में, वहाँ पर फुटपाथ के ऊपर जो ब्रांड न्यू बुक्स थी, स्पेशल एडिशन, ओनली
50 पैसे 50 पैसे में मिलने वाली माने हाफ और रुपी इसके अंदर मिलने वाली किताब वो खरीदते हैं। द गॉड दैट फेल उनका नाम था। 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journey into communism and their disillusioned return. Henry Guide, Richard Wright, Ignazio Salion, Arthur Koestler, Louis Fisher, and Stephen Spender. Stephen Fender. Suddenly, the book assumed tremendous significance. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. तो यहाँ पर वो नाम देखते हैं कि जिन जिन राइटर इसके अंदर ऐसे थे तो इनके अंदर एक नाम लास्ट में स्टीफन स्पेंडर का भी नाम था और वो तुरंत ही याद आ जाता है। In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that fell. तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो वहां पर उनकी पोएट्री थी वो सभी उन्हें दी गई थी, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल। तो वो इनके अंदर नहीं थी जो यहाँ पर जो थीम यहाँ पर दिया गया था। तो जिन जिन जो एसेज थे इनके नाम दिए गए, इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा लिखा है तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 65। An English poet, essayist who concentrated on the theme of social injustice and class struggle, माने ये जो एडिटर बाहर से आया था वो स्टीफन स्पेंडर। इसके बाद 6 नंबर के ऊपर जो लिखा था नाम यहाँ पर वो था एंड्रयू गाइड, a French writer, humanist, moralist, received the Nobel Prize for Literature in 1947। 7th नंबर के ऊपर रिचर्ड राइट, इनके बारे में यहाँ बताया है। एन अमेरिकन राइटर नोन फॉर हिज नॉवेल नेटिव सन एंड हिज ऑटोबायोग्राफी ब्लैक बॉय। 8 Ignazio Salion, an Italian writer who was the founder member of the Italian Communist Party in 1921 and is known for the book The God That Fell, authored by him। 9th, and Stephen Spender, Arthur Koestler, इनके बारे में बताया है कि Hungarian born British novelist, known for his novel Darkness at Noon, और 10th पोजीशन के ऊपर लुइस फिशर, a well-known American journalist and a writer of Mahatma Gandhi's biography entitled The Life of Mahatma Gandhi. The Oscar-winning film Gandhi is based on this biographical account। तो इनके बारे में तो हम जानते हैं क्योंकि जो लुइस फिशर जिन्होंने गांधी जी के जीवन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और हम जो लास्ट 5th यूनिट हम पढ़ गए इंडिगो यूनिट हम पढ़ गए वो पूरा इनके बेस के ऊपर ही स्टोरी थी। इनका भी राइटर यही था, लुइस फिशर थे इनके राइटर। तो यहाँ पर ये पूरे जो यूनिट है जेमिनी स्टूडियो वो पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो माने इनके बारे में ये पूरी स्टोरी हमने अच्छी तरह से पढ़ ली, इनके सभी बातें डिस्कस कर ली है, एक्सप्लेन कर लिया है। और यहाँ पर तो और 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑल द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर बुक। फर्स्ट वन, हु वाज इन इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज। सेकंड, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर व्हाट द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज। थर्ड, व्हाट डज द गॉड दैट फेल रिफर टू। तो यहाँ पर ये सभी बातें जिसकी हमने अच्छी तरह से चर्चा की है। You have to write down all the things in your fair book। So यहाँ पर आज इस एपिसोड के अंदर इतना ही। ओके, हैव ए नाइस academic year। थैंक यू।